तो का ज़माना वो था 1990 से 2005 का, जब मैं आपकी एज ग्रुप में था। और हमारे ज़माने में तो MIRC चैट होता था एंड इंटरनेट पे जब कनेक्शन करना होता था तो आवाज़ आ रही होती थी मॉडेम पे, टिन टिश टिश की, कोई ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं थी। दैट वाज रीड ओनली। वेब 2.0 इज़ रीड एंड राइट। ये ज़माना है करीम का, ऊबर का, नेटफ्लिक्स का, जहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं वेब्स के साथ, राइट कर सकते हैं। वेब 3.0 इज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, इट्स रियल रेवोल्यूशन। यू कैन रीड, राइट एंड ओन। ये जो ओन का कॉन्सेप्ट है ना, ये डिसेंट्रलाइजेशन का अनजा कॉन्सेप्ट है। ये जो ओन का कॉन्सेप्ट है, ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है या डिसेंट्रलाइज्ड वेब का कॉन्सेप्ट। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ योर कॉम्प्रीहेंशन। यू गाइज नो व्हाट ब्लॉकबस्टर इज? एनीवन रिमेंबर व्हाट ब्लॉकबस्टर वाज? No, I don't think one in the audience would know, but I'll tell you. It was basically one of the building blocks for Netflix, where you could actually go and rent out movies. Yeah, man. So Blockbuster was one of the finest rental DVD store in early 2000 and late 90s, which is evaluated at odd $1 billion plus. लेकिन वो ज़माना ब्लॉकबस्टर को जिसने रिकैलिब्रेट किया है या जिसने डिसरप्ट किया है वो है नेटफ्लिक्स। आप नेटफ्लिक्स पे कभी भी अपना कंटेंट चला के देख सकते हैं। सो अब नेटफ्लिक्स को जो रिकैलिब्रेट करेगा, दैट इज़ वेब 3.0। बाय द वे, आई एम अ बिग फैन ऑफ ऑडियंस। अगर आप लोग नहीं समझते उसको गूगल करके देखिए, चैट GPT पे डाल लें, यू विल नो व्हाट ऑडियंस इज। सो रीड, राइट एंड ओन इज़ वेब 3.0। ओनिंग बाय द कंज्यूमर इज़ वेब 3.0। क्योंकि नेटफ्लिक्स पे, फेसबुक पे जब रीड एंड राइट था, सो जो कस्टमर है या कंज्यूमर है जो देख रहा है और जिसने कंटेंट बनाया है वो वेल्दी नहीं हो रहे, प्लेटफॉर्म वेल्दी हो रहा था। रीड, राइट एंड ओन में जो कस्टमर जिसका कंटेंट है वो वेल्दी हो रहा है। So that is decentralized. Absolutely. So I remember with Blockbuster, one of the biggest failures was the fact that they were just giving out these DVDs without actually giving the royalties to the production companies and the actors, etc. And I think a big component of the decentralized web is going to be really intellectual property rights, and that's a big component of it. We've seen a lot of it with NFTs in particular. I would like to understand what are some of the opportunities that you see in this domain with regards to the context of Pakistan alone. Yep, good question, very important question। और जो लोग कम बैठे हुए हैं लेकिन जो बैठे हुए हैं आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अटलांटिक ओशन की एक रिपोर्ट है बड़ी लेजिट और ऑथेंटिक, दैट सेज दैट वेब 3.0 इज $100 billion पोटेंशियल फॉर पाकिस्तान। सो इट्स नॉट अ जोक, इट इज़ $100 billion पोटेंशियल टिल 2040 2050। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोडर होना है, डेवलपर होना है, टेक्निकल होना है। इसमें प्रोडक्ट की जॉब्स भी हैं, मार्केटिंग की जॉब भी हैं, एंटरप्रेन्योरल की भी जॉब्स हैं। पाकिस्तान में जब से डिजिटाइजेशन स्टार्ट हुई है, कहीं कहीं पे पॉलिसीज़ ना होने की वजह से, ओपन APIs ना होने की वजह से प्रॉपर डिजिटाइजेशन शायद ना हो पाई। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो वेब 3.0 हमें लीप फ्रॉग करने का मौका दे रहा है, चाहे वो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस हों, कंज्यूमर्स हों। सो $100 billion का अंजा पोटेंशियल है पाकिस्तान में, और फ्रंटियर मार्केट्स में तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पोटेंशियल है। बिकॉज जितना भी आप आजकल देख रहे हैं वो सारा का सारा हाइब्रिड मॉडल पे जा रहा है, मेटावर्स के अंदर, जिसके अंदर इंटरऑपरेबिलिटी NFTs पे भी होती है, डिजिटल कॉइन्स पे भी होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि फिजिकल वर्ल्ड ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड था पहले, वो गेमिफिकेशन की हद तक बहुत सारे लोग जहाँ पे पैसे बना रहे हैं, हमारे जैसे सीनियर लोगों को मजाक लगता था। अब वो हमें भी मजाक नहीं लगता, क्योंकि वो वहाँ वो $1 trillion अपॉर्चुनिटी है। सो इट्स अ hybrid model of virtual and physical. It's more web 2.5 right now. 3.0 is too ideal. It will come. Answer to your question, for Pakistan, by far, mark my words, go to Atlantic Ocean. It's $100 billion potential from top to bottom. चाहे कोई financially included है, चाहे नहीं है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोगों की जॉब है कि अपना शेयर इसमें से दे सकें। Very encouraging to hear that, sir. Mr. Hassam Sohail, the founder of Spotcom. So, where do you think some of the challenges lie? Because ever since Meta was announced, we've seen a very big drop in the share prices. We've been seeing quite a few challenges emerge. Maybe the world is not ready yet, and especially in the context of South Asia, where there's still digital inequality, there's a digital divide.
What do you think are some of the challenges? देखिए सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस अभी मैं काउंटर पार्ट ने भी एक्सप्लेन किया एक्चुअली वी आर पैडलिंग अप कोविड ने तो पैडल अप किया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बट वेब 3.0 इज जब तक अब इट्स अ पीयर टू पीयर नेटवर्क मेरे और आपके दरमियान का नेटवर्क है इसके अंदर मतलब जो आपने वेब 2.0 की बात की नौशाद ने इट्स ओनली सेंट्रल बेस जहाँ पे ट्रस्ट अवेलेबल है इसमें जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है जो हम बहुत थर्ड वर्ल्ड की तरफ हैं तो वेब ऑफ ट्रस्ट को कायम करना इज़ अ बिग चैलेंज टू इट अवेलेबिलिटी इज़ अ बिग चैलेंज टू इट देन सब पाकिस्तान के अंदर आ जाए पाकिस्तान के अंदर फाइनेंस देन वी हैव अ रेगुलेटेड इकोनॉमी रेगुलेटेड फाइनेंस वी आर बीइंग वेयरिंग अ कैप ऑफ साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वी हैव अ चैलेंजेस इट्स अ पीयर टू पीयर नेटवर्क अगर आपका एक नोड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ऑन अ ब्लॉकचेन लेजर तो वो आप ये देखें इट्स कॉन्सेप्ट कॉल्ड एवलांच इफेक्ट गार्बेज इन गार्बेज आउट देन द थिंग इज जैसे भी नौशाद ने अगेन बात की कि कॉम्प्लेक्सिटी दिस इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म राइट अवे इसके अंदर वी हैव बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टुगेदर बट इसको जब तक आप मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है अपार्ट फ्रॉम ऑपरेशन साइड इट हैज़ टू बी रेगुलेटेड समवेयर समहाउ इट इन्वॉल्व्स वेब 2.0 में यू आर डीलिंग इन करेंसीज लाइक डॉलर पाकिस्तान रुपीज एनी करेंसी डिनोमिनेटर बट in web 3.0 correct me if I'm wrong we are dealing in cryptocurrencies Absolutely. right if I have to transact I have to deal in cryptocurrency then you have to have a wallet again crypto wallets it's a whole science about it अगर आपकी कीज ख़त्म हो कीज जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि अगर मैं तक टेक सेविंग मैं समझ सकता हूँ मतलब नॉर्मल लोगों को समझने के लिए इसको एजुकेट होना बड़ा ज़रूरी है कि आपकी अगर कीज़ गुम हो जाती हैं तो यू स्टैंड नो वेयर आपका बिट आपका वॉलेट और आपकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी के वो है यू गॉन Absolutely. When we talk about smart contracts and bringing about even the most minute changes, we know that there is a whole long process. If you want to, like, let's say, modify some initial terms of a बट contract. मैं इसमें लास्ट यही कहूँगा कि कॉन्सेप्ट इज़ वेरी ग्रेट इसको ये बट नथिंग इज जहाँ से मैं देखता हूँ इट विल बी डेकेड और सो इट्स अ जर्नी ऑफ अ डेकेड और सो क्योंकि इट हैज़ टू बी रेगुलेटेड समवेयर आप इसको ऑर्फन नहीं खुला नहीं छोड़ सकते मेरे ख्याल में Absolutely. Sir, so just to build up on that, एक last point मैं कहूँगी that not just from the financial aspect of things, but it just the question just poses itself that if we do not have any regulation, having a decentralized web altogether, knowing all kinds of evils that exist in society, what is to stop things like pornography or even like radical mindsets or hate speech? What do you think can be done in that regard? Thank you, Azhar. So the concept of decentralized web or web 3.0 only empowers us to be free, right? So that's the main concept of web 3.0. Currently, web 2.0 there's too much power with the big corporations. They can take your content down. These issues, the freedom of putting any content out there can be hate speech or others as well. That freedom will be there. It's like decentralized web is a tool, you can use it the way you want it, right? So once you have put a content out there on decentralized web, even the app owner has no right to remove that content. So do you think the governments will be supportive of when I hear discussions like regulation of decentralized web, I mean that's the whole concept of defeats the purpose. Yeah. Right? So you are trying to go away from the big powerhouses who has all the power to take down your content and decide what people can see and what they cannot see. Even if you spoke about Web 2.0,
it's decided by the big corporation what content is visible to me and what content is visible to you. So depending on what my data points are with the corporations, right? So it's in their hands. This is a little bit of people coming back at big corporations, people who believe in civil liberties and freedom. So I think that's all the decentralized web is all about. So if you start looking at putting regulations and stuff, I think it's against the concept of the decentralized Right. web. Thank you so much for giving us this food for thought. And with that, we're going to conclude this panel discussion for today.